डॉक्टर पात्रा जितेबाला जड़े ब्लड कैंसर रे आक्रांत होउछन्ते सर्वाइवल चांसेस केते रहउछि कहीं ना जेमती सबु कैंसर गोटे ट्रीटमेंट वेरी लॉन्ग प्रोसेस थाए ब्लड कैंसर क्षेत्र रे तार प्रोसेस कोन सर्वाइवल चांसेस केते रहउछि एक्चुअली डॉक्टर स्टालिन जहाँ कहले जो सिम्पटम्स रे जो सिम्पटम्स रोचे तो एक्यूट लिक्यूमिया क्रोनिक लिक्यूमिया जोटा कि एक्यूटली प्रेजेंट होची और जोटा कि क्रोनिक रे प्रेजेंट होची सो आमर एथरे लिक्यूमिया रे कोन हुए आमर जो बोन मेरो सेल्स अछि तार एबनॉर्मलिटी देखा जाए जोटा कि प्रीमेच्योर सेल्स तांके बोन मेरो को पूरा ऑक्युपाई करंती सो नॉर्मल सेल्स फंक्शन हेई पारेनी सो से कौन हुए जिते बड़े एक्यूट लिक्यूमिया बारंबार गोटे छोट मोस्टली आम कौन करूँ जो पेसेंट मैंने आम पाख आसती ल्यूकीमियार ब्लड कैंसर से मैंने प्राय मेडिसिन स्पेशलिस्ट हो कि शिशु रोग विशेषज्ञ आम पाख पठाती से कौन हुए जोमा किमती से प्रेजेंट करती मोस्टली से बारंबार इन्फेक्शन हवा बारंबार काश हवा बारंबार दुर्बल लगे बारंबार हॉस्पिटलाइजेशन हवा जोटा कि आम रोग जानीपारना से कौन हुए जो पेरिफेरल स्मीयर जोटा कि कंप्लीट ब्लड काउंट जोटा कहते आम तार आम से देखी डायग्नोसिस कर जाए सो एवं जो मानकर क्रॉनिक ल्यूकीमिया कहते जोड़ा आडल्ट पॉपुलेशन माने वयस्क मानकर जोड़ा देखा जाए मोस्टली से मानकर लिम्फ नोड्स बाहरी थाए नोड्स एंड स्प्लीन बढ़ी थाए लिवर बढ़ी थाए से गुड़ा देखिए आम जानीपार सो द्वितीय कथा जो क्यूर रेट रही ALL जोड़ा छोट पिला मानक जोड़ा आमर प्रति माँ बापा बहुत हैरान हो जाती एंड एवरीथिंग सो सेटार प्राय 90% क्यूर रेट अच्छी से आम आदौ डरवा दरकार नहीं आपणकर परिवार जनर हो भगवान करंतु समस्ते भलरे थांतु जदि भी कौन परिवार कौन सांगटे छुआटे कि साथीर छुआटे कि बंधुर छुआटे ब्लड कैंसर आदौ डरवार कौन कारण ना कहीं आज पर्यंत 90 to 90% क्यूर रेट आम देखीचु किंतु स्लाइटली आमर इंडिया रे आम भारत रे एटा स्लाइटली 60 to 70% रही है कहीं स्लाइट धीरे धीरे आम एज नो वी आर डेवलपिंग कंट्रीज स्लोली आमर स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़ी बढ़ी चली आग ट्रीटमेंट करने लोक पाखे पैसा नाला आज विजु स्वास्थ्य कल्याण माध्यम आयुष्मान भारत माध्यम आम लोक आम ट्रीटमेंट दे पार्छु सो से आगो बढ़ी आमको अर्ली प्रेजेंट कर स्लोली वी आर ग्रोइंग टुवर्ड्स द कर्व टुवर्ड्स द अदर कंट्रीज एंड से आजिकल जो आम कहते ब्लड कैंसर जे खाली लोकटे हेले मरीज ना आदौ नुह आर जोड़ा एक्यूट लिक्यूमिया जोड़ा आम कहूँ आजिकल भल ट्रीटमेंट है क्रॉनिक लिक्यूमिया जोड़ा के आम CML हो CLL जोड़ा आडल्ट पॉपुलेशन थाए से मैंने इट इज ए क्रॉनिक से दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम एंड CML जो अच्छी इमाटिनिम हो कि डासाटिनिम से टैबलेट नहीं से पूरा बंची पारे एवं CLL रे आजिकल ओराल टैबलेट आसिगला खाली बटिका खाई बंची पारे सो BTK इनहिबिटर्स सो इब्रुटेनिब विभिन्न प्रकार बटिका माने मेडिसिन आसिला जोटा कि आपको बारंबार इंजेक्शन ये सब किसी आवश्यकता नहीं से माने बहुत दिन बंची पारे डॉक्टर चौधरी likewise you said there are so many kind of symptoms but is there any specific age group of which small kids or people are getting more affected through this blood cancer? Is there any kind of specific age group? There are, as I told you previously, the leukemias and lymphomas are the common blood cancers. Among leukemias, we have acute leukemias, of which there are two types, that is acute lymphoblastic leukemia and acute myeloid leukemia. So acute lymphoblastic leukemia is a type of blood cancer which is very common in the pediatric age group. It is the most common cancer which is occurring in the pediatric age group, that is between 1 year and the 18 years. It is the most common cancer. It also occurs in adults, but in children it is the most common cancer. If you take acute myeloid leukemia, it is less common in pediatric population. It is more common in adults and elderly population. If you take the chronic leukemias, they are usually occur in the elderly population. They are not common in the pediatric age group. So each age group has a specific blood cancer which occurs in that particular age group, most common. Why I ask this question, the motive behind this question is, one of my friend, in his house, there is a kid who is studying in class 7th or 8th, I exactly don't remember. She is suffering from blood cancer and she is taking medication, she is surviving. But the thing is that she need to be prevented from doing the general things what other kids are doing, like from sports activities or any kind of such activities. What are the awareness or what are the consciousness one should have
if someone is affected through this? Usually, if you say that case, so at 7th class means around 10 to 12 years of it is the most common cancer is acute lymphoblastic leukemia. For acute lymphoblastic leukemia, the treatment usually consists of 2 years of treatment, and the first 6 months of treatment will be very intense. That consists of 3 phases: induction, consolidation, repeat induction, followed by 2 years of maintenance therapy with oral tablets. During the first 6 months of therapy, patient will be receiving higher doses of chemotherapy to kill all the cancer cells which are there in the bone marrow. So the immunity of the patient is extremely low. So what we advise at that point of time is don't go out, don't mingle with other children, because if at all you are in contact with any person who has an infection, so these children will get infection more severely and more faster than other individuals. So we typically tell them to isolate them, to have a good food, so that they can tolerate the chemotherapy well. They should not play outside because their hemoglobin platelets are a bit low. So any injury will cause them bleeding. Once the treatment is completed, once they are cured, they will live life like other children. There won't be any restrictions at all in terms of diet, playing, going to school or anything. Once the treatment is completed and we tell them they are cured of cancer, They there also won't be can any have a very restriction at all. normal life like other Yeah, kids. they can lead a complete normal life after that.